So, okay, the series is Dil Se Dimag Tak. Thought shape your personality. So everything starts from our heart and it is conveyed to our mind. What we feel, what we think, we feel, we start to convey it to our brain, and then that becomes our personality. So the day one kickoff live is about our thoughts, how they impact our personality, how they shape our personality, and how they change or they are the manufacturers of our destiny and our life. They are the controllers of our life. So, uh, throughout my life, it has been, I have noticed it many times that uh, same kind of people enter into an interview room. Two people, three people enter with the same type of resume, same qualification, same answers, nearly same answers for the interview, but only one person is selected. Why? Because the moment they walk inside the room, the interviewer judges their personality and they have been selected at that instance. जिस समय वो बंदा रूम के अंदर आता है उसी वक्त इंटरव्यूअर उसको सेलेक्ट कर चुका होता है, चाहे आपकी रिज्यूमे चार लोगों से मैच कर रहा हो, आपके आंसर्स चार लोगों से मैच कर रहे हो और आपके क्वालिफिकेशंस चार लोगों से मैच कर रहे हैं, but yes, your personality plays an effect on the interviewer and you are selected. So the difference is what we are going to build over the next 30 days. This difference of the personality, we are going to build it in the next 30 days. So comment in the chat box that I am here right now so I know. Just a quick review this 30 days challenge. This is a rewiring challenge, not a technique dump. It is not a 30 days technique in which I am going to give you 30, 40 techniques and out of which 90%, 95% you are going to forget. The techniques which you do not feed to your mind, you are obviously going to forget. It is not a generic motivational talk with a non follow through. And it is also not a personality transplant overnight. कि मैं आज बोलूं कि आपकी पर्सनालिटी कल से अपग्रेड हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. It is only going to happen when you attend all the 30 days, you come back. You don't need to be perfect. You need to be present in this moment. You need to be consistent for 30 days. You need to consistently follow the 30 days rule to upgrade your personality. Now, one question that I want to ask you, what brings you to this challenge? आपको इस challenge में क्या चीज लेकर आई है? Either I want more confidence, or I want to communicate better, or I want that people notice me. People should take me seriously. So आप यहाँ पे इस लाइव सेशन में किस पर्पस से आए हैं? क्या आप कि आप और ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन करें, या आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, एक बेटर कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि लोग आपको सीरियसली लेना शुरू करें, आपकी पर्सनालिटी एक इम्पैक्टफुल पर्सनालिटी हो. So yes, in this session, we are here to build confidence. We are here to improve our personality. We are here to develop strong thinking. And we are here to become the best versions of ourselves.
द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्फ। हम इस सेशन में वी आर गोइंग टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, वी आर गोइंग टू अपग्रेड आवर पर्सनैलिटी, we are going to develop strong thinking, a positive mindset, and also we will become our best self. So, what do you think? What is personality? In the starting also, I asked, what do you think? अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी पर्सनैलिटी को डिफाइन करें तो हाउ विल यू डिफाइन? इन द स्टार्टिंग आई आस्क्ड, सो व्हाट डू यू थिंक? व्हाट क्रिएट्स पर्सनैलिटी? माय सेकंड क्वेश्चन, व्हाट क्रिएट्स पर्सनैलिटी? क्या आपको लगता है कि अच्छा लुक, अच्छी इंग्लिश बोलने से, अच्छे पैसे होने से या रिच होने से आपकी पर्सनैलिटी बनती है? तो ऐसा नहीं है। पर्सनैलिटी की फाउंडेशन आपकी थॉट है, आपकी सोच है। योर थॉट इज द फाउंडेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी। Your thought is foundation of your personality, and it is what builds slowly and gradually a person, a destiny, a life. यही सोच धीरे धीरे इकट्ठा होके एक इंसान की पर्सनालिटी बनाती है, उसकी डेस्टिनी बनाती है, उसकी लाइफ बनाती है। सो व्हाट पर्सनालिटी रियली इज? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक सेंटेंस में डिफाइन करें तो आप क्या डिफाइन करेंगे? पर्सनालिटी क्या है? सो पर्सनालिटी इज अ पैटर्न ऑफ Personality is a pattern of thoughts, emotions, and behavior, and this pattern can be changed. Personality is Personality is a pattern of thoughts, emotions, and behaviors, and this pattern can be changed. Yes. So, what are the three beliefs holding you back? अगर हम अपनी पर्सनालिटी के पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं चेंज करते? एंड वी शुड डू इट, बट व्हाट इज दैट थिंग व्हिच इज होल्डिंग अस बैक? वो ऐसी क्या चीज है जो हमें अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने से रोकती है? सो देयर आर थ्री बिलीव्स बेसिकली व्हिच होल्ड्स अस thinking that personality फिक्स्ड एट बर्थ। हम ये सोचते हैं कि हम इस पर्सनालिटी के साथ पैदा हुए हैं और इसे चेंज नहीं कर सकते। वी थिंक दैट वी हैव टेकन बर्थ विद दिस पर्सनालिटी, दिस इज माय पर्सनालिटी एंड वी कैन नॉट चेंज इट। सो दिस इज अ मिथ। द सेकंड मिथ इज दैट एक्सट्रोवर्ट्स हैव बेटर पर्सनालिटी। हम सोचते हैं कि इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं उनकी पर्सनैलिटी उतनी अच्छी नहीं होती, और एक्सट्रोवर्ट्स जो होते हैं, जो हर जगह अपने को कम्युनिकेट कर लेते हैं, उनकी पर्सनैलिटी ज्यादा बेटर होती है। बट दिस इज अ मिथ। और तीसरा मिथ है कि वी थिंक यू इधर हैव कॉन्फिडेंस और यू डोंट। हम ये सोचते हैं कि या तो आपके पास कॉन्फिडेंस होता है और या तो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। सो what is the reality? The first myth, personality is fixed at birth. No, it is not fixed at birth. It is a pattern and patterns can be changed. Personality by birth fix नहीं होती है, ये एक पैटर्न होता है और इस पैटर्न को हम चेंज कर सकते हैं। Second, extroverts have better personality. So no, there is no criteria for a better personality. Introverts can also have better personality. Extroverts can also have better personality. Your presence matters, not your volume. Your presence matters, not your volume. And the third myth is you either have confidence or not. But the reality is confidence is a rehearsed behavior. Confidence एक
एक ऐसा एक्शन है जो हम रिहर्सल करके अपने में जनरेट करते हैं। कॉन्फिडेंस एक रिहर्स्ड बिहेवियर है, जस्ट लाइक एक्टिंग। और इस एक्टिंग को बखूबी सीखने वाला कॉन्फिडेंट कहा जाता है। सो यस, पर्सनैलिटी कैन बी चेंज्ड। There is no categorization of a better personality, and personality, the confidence in the personality is a rehearsed behavior. So the main or the basic idea is that every trait that you have, कोई भी गुण जो आपके अंदर है, चाहे वो टेम्पर हो, चाहे कॉन्फिडेंस हो, चाहे शाइनेस हो, आपका चार्म हो, आपकी क्यूटनेस हो, दे डिड नॉट स्टार्टेड एज अ ट्रेट। वो एक ट्रेट की तरह नहीं शुरू हुए, वो एक थॉट की तरह शुरू हुए। एवरी ट्रेट दैट यू हैव, be either a confidence, temper, your shyness, your cuteness, your charm, they did not start as a trait, they started as a thought. So that means one thought repeatedly becomes your personality. That means initiation of your personality is through a thought. आपकी पर्सनालिटी कैसी है वो आपकी सोच डिसाइड करती है। तो आप जैसा सोचते हैं आप वैसा बनते हैं। वी बिकम व्हाट वी थिंक। और ये एक बहुत ही कॉमन सा कोट है जो हम आए दिन इधर उधर मोटिवेशनल टॉकर्स से सुनते रहते हैं। जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स, दे ऑल्सो कम ऑन द प्लेटफॉर्म एंड से your thought process creates your personality. What you think, you become. What you think, you desire, you will become. So that means one thought repeatedly becomes your personality. How? So if I need to prove it, I'll say, suppose I have to go and give a talk in front of 100 people, and I have to go and give a talk in front of 100 people. Now, suppose I am not a confident person, so what I will think? I can have a lot of negative thoughts. I will think what will happen if the people will laugh at me? What will happen if my uh, talk is not so effective? What will happen if the content which I am going to deliver is not up to the mark? And anything that is negative, we can think. So, this one negative thought, that what if the people laugh, it has created a feeling. I started to believe it, and it has created a feeling that has led to anxiety and hesitation. जब मैं ऐसा सोच लूंगी कि क्या होगा कि अगर लोग मेरे ऊपर हंसने लगे उस टॉक में, तो ऑब्वियसली फिर मैं हेजिटेट करना शुरू करूंगी, मुझे एंजाइटी होगी, आई स्टार्ट टू फियर, आई विल बिकम एंशियस, and this feeling will create a action, will create a reaction where I will not be able to speak. I will freeze, I will keep silent, or I'm not going to deliver the talk. So एक single thought, the single thought had created so much impact on my mind. I thought कि मुझे ये talk देनी है, अगर मैं वहां पर गई, लोग मेरे ऊपर हंसने लगे तो क्या होगा। धीरे धीरे ये सोचते सोचते मेरा एक बिलीफ सिस्टम हो गया कि पक्का मैं वहां पे अगर गई, people are going to laugh at me. This created a feeling of anxiety, of hesitation, and
The reaction is I froze when I had to give the talk. I I became silent and I avoided speaking. And this created a personality. This reaction will create an impact of the personality that I am a shy person, that I am a shy person. Now, what will happen? My personality will be certified as a shy person. Here and there, people are going to say, oh, they look, she's a very shy, she's a very introvert person, and she cannot talk even in front of some people. So, that is the labeling of the personality. One single negative thought has labeled my personality as I am a shy and introvert person. So now what will happen? So now these thoughts, there is a personality formula which every one of us should know. The formula says, and as we have discussed before also, that our thoughts they create the feelings create the belief creates actions. These actions are going to become our habit, and these habits are going to accumulate and form our personality. This personality is going to create our destiny. It is going to create our life. It is going to create our future. How we live, how fruitfully, happily, successfully we live, it started with a single thought. So, if your thoughts are positive, obviously your destiny is positive, your life is positive, your personality is positive. If your thoughts are negative, obviously your personality is negative, your destiny is negative. So, to uh, 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 now, what I said, so I just want to convey a story. I'll tell a story uh, to obviously support what I said, obviously support the personality formula, what I have told you. Now, what happens? The story will tell you the power of thoughts. What happened? There was a father who was a completely alcoholic person, and he has two sons. Now, this father was a complete loser. He would go out, spend his day just roaming here and there, and return home, drink, becoming drunk, carrying alcohol at home, mess, create chaos in the house, and then he passes out. He is a complete loser. Now, both of his sons grew seeing him. Both of the sons, they grew seeing him. And what happens? The sons, one of the son, both of the sons are in the same situation, same upbringing, same circumstances, but the thinking, the thought process is, I will. One of the son thinks I will never be like my father. I'm going to create a better life. The another says, I will end up like him because he is my father. I cannot help. Nothing can change. So now what happens? One son with the positive thought becomes a successful businessman, while the younger one becomes a drunk just like his father and unsuccessful alcoholic person. A question was asked to both the sons
that why are you like this? Why one of you is successful and the another is not successful? Both the boys gave same answer. Can you think what they say? What they said? Can you think what would have been the answer of both the sons? They both gave the same reason for their life which they were leading. One became successful, one became unsuccessful, and an alcoholic, just like his father. The question asked was, why are you so successful and why are you so unsuccessful? Both of them gave same answer. And the answer was, because my father was so. क्योंकि मेरे पिता ऐसे थे इसलिए. जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन था उसने कहा क्योंकि मेरे पिता एक ड्रंक आदमी थे इसलिए मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना. और दूसरे बच्चे ने कहा क्योंकि मेरे फादर एक ड्रंक थे इसीलिए मैं उन्हीं की तरह एक अनसक्सेसफुल पर्सन बना. सो नाउ the both were asked same question and both have given exactly same answer. So where was the difference? The difference was in their thoughts. The difference was in their thoughts where one of the kid thought, because my father was a drunk and a loser, I am not going to be like him and I will become a successful person. While the another thought, because my father is a drunk, I don't have any hope with me. I will also end up like him. So what? Same situation, different thoughts and different life. Both the kids, same parenting, same house, same facility, same life situations, but the thought process matters. They had different, that is why their destiny was different life. So negative thoughts create life, while positive thought created a positive life. So the thing to remember is your thought decide your direction. आपके thoughts, आपकी direction, आपकी destiny, आपके future को decide कर सकते हैं. Think positive and live a better life. Think positive and live a better life. So now let's decode your personality. Let us decode your personality, what your personality really is. और वो हम कैसे करेंगे? Let us decode what your personality is. Now, what we are going to do, I'm going to share 4 questions with you. You are going to answer in the chat box. How, what means these are multiple choice questions, and you are going to answer in the comment in the chat box your answers. You are going to comment. There are 4 questions. Like question number 1, it has 4 options. You are going to comment in the chat box. You are going to, if you are not commenting on the chat box, you have a pen and paper and you just find out about your personality. What is the photo, the real picture of your personality today? It is day 1 and we are going to decode the photograph of your personality today. What is the day 1 where we have started this 30-day personality challenge? We are now going to decode your personality, answer the 4 questions and match it with the result, and you're going to know what your personality is. So here is first question for you all. The first question is,
The first question is, in a new group of people, you usually, your options are wait for someone to talk to you, jump in and introduce yourself, observe first, then speak, or feel anxious and stay quiet. So here are four questions. Here are four questions. Sorry, here is the first question कि आप जब एक नए लोगों से मिलते हैं तो आप क्या करते हैं? You wait for someone to talk to you. आप रुक कर वेट करते हैं कि पहले कोई आएगा और मुझसे बात करेगा, या दूसरा ऑप्शन, आप तुरंत ही उनके पास जाते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और उनसे फेमिलियर होने की कोशिश करते हैं. द थर्ड इज यू ऑब्जर्व फर्स्ट एंड देन स्पीक. आप पहले ऑब्जर्व करते हैं और फिर बात करते हैं. द फोर्थ इज यू फील एंशियस एंड स्टे क्वाइट. आप एंशियस हो जाते हैं और शांत हो जाते हैं. So comment in the chat the answer for the first. What do you do in a situation when there are new group of people? What do you do in such situation when there are new group of people? The second question is, when criticized, your first reaction is. जब कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, जब कोई भी आपके बारे में गलत बातें करता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है या आपकी कमियों को उजागर करने की कोशिश करता है, when anyone criticizes you, what is your first reaction? So the first, whether you think that they are right, I'm not good enough. क्या आप ऐसा सोचते हैं कि ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, मैं वाकई में ही बेकार हूँ? और सेकेंड, लेट मी हियर देम आउट. चलो इनको सुनते हैं, ये क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में. द थर्ड इज, आई वॉन्ट टू डिफेंड माई सेल्फ. नहीं, ये गलत है, मुझे अपने आप को डिफेंड करना है. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज, आई विल थिंक अबाउट इट लेटर. मैं बाद में इसके बारे में सोचूंगा. सो व्हेन एनीवन ट्राइज टू क्रिटिसाइज, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन? आपका पहला रिएक्शन क्या होता है जब कहीं पे भी कोई आपको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करता है? आप क्या सोचते हो? ऑप्शन वन, दे आर राइट, आई एम नॉट गुड इनफ, और लेट मी हियर देम आउट, or I want to defend myself, or I will think about it later. Write it in on a paper. Your question number one, your option. Question number two, your option. Then comes question number three. Begin, that is before a big conversation. Before a big conversation, what happens? Before a big conversation, you think. The option one is, I hope I don't mess up. Second, I have got this. Let's see. Third, I need it to be perfect. I need to be perfect. And fourth, I will just get through it. एक कोई भी बड़ा कन्वर्सेशन कहीं पर भी हुआ है तो आप क्या सोचते हैं? पहला कि आई होप आई डोंट मेस अप. ऐसा ना हो कि मैं कहीं पे सारा गड़बड़ कर दूं. या आई गॉट दिस, लेट्स सी. मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, चलो देखते हैं. थर्ड, आई नीड टू बी परफेक्ट. मुझे परफेक्ट होना है, होना ही पड़ेगा. या आई विल जस्ट गेट थ्रू इट. बस किसी तरह से ये कन्वर्सेशन निकल जाए. आई विल जस्ट गेट थ्रू इट. मुझे बस इस कन्वर्सेशन से बाहर निकलना है किसी भी तरह से. So question number three, your option. And the last question, question number four, when you achieve something. जब आपको कुछ बड़ा हासिल हो जाता है या कुछ कुछ भी, एक छोटी सी विन, एक कुछ भी आप जब हासिल करते हो तो आप क्या कहते हो? When you achieve something, what do you say? First, I got lucky. मैं लकी इसलिए मुझे मिला. सेकेंड, आई अर्न दिस. मैंने ये अपनी मेहनत से कमाया है. थर्ड, इट्स नॉट अ बिग डील. ये पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. एंड फाइनली फोर्थ, फाइनली समथिंग वर्क. अरे चलो फाइनली कुछ तो हुआ. सो what do you say when you achieve something?
सो व्हाट इज योर ऑप्शन अबाउट योरसेल्फ? जब आप खुद कुछ अचीव करते हो तो आप इन चारों में से क्या सोचते हो कि आई गॉट लकी, आई अर्न दिस, और इट्स नॉट अ बिग डील, और फाइनली समथिंग हैपेंड? तो इन चारों क्वेश्चंस के आंसर आप लिख लीजिए, और वी आर स्टार्टिंग टू गेट योर फोटो, योर पर्सनालिटी फोटोग्राफ टुडे। सो इट इज, कुछ भी आपकी पर्सनालिटी डिकोड होती है, इट इज नॉट अ लेबल। आपकी पर्सनालिटी का ये लेबल नहीं, मैंने शुरू में ही बताया, पर्सनालिटी इज अ ट्रेट, इट इज अ पैटर्न, इट इज नॉट अ ट्रेट, इट इज अ पैटर्न एंड इट कैन बी चेंज्ड। तो हम पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं, इसीलिए हम किसी की भी पर्सनालिटी को लेबल नहीं कर सकते। ठीक? सो इफ योर ऑप्शंस आर मोस्टली ए एंड डी, अगर आपका ऑप्शन मोस्टली ए और डी है, तो यू आर अ पर्सन हु इज फिल्ड विद सेल्फ डाउट। अगर चारों में से आपके ऑप्शंस ए हैं या डी हैं, तो माय डियर फ्रेंड, यू आर अ पर्सन हु इज फिल्ड विद लॉट ऑफ सेल्फ डाउट। आपको अपने बारे में ही बहुत सी गलत फहमियां हैं, एंड दे आर बाय डिफॉल्ट। If your option is mostly C, if your option is mostly C, you are under pressure and you are addicted to perfectionism. आप हर चीज में परफेक्ट होना चाहते हैं, आप perfectionism के एडिक्शन में हैं, which is also not a good trait for your personality. And if your option is mostly B, so my dear friend, congratulations, you have a healthy base. आपकी पर्सनालिटी का फाउंडेशन फ्रूटफुल है, हेल्दी है, और इसे हम और शार्पन कर सकते हैं. सो वी कैन शार्पन योर पर्सनालिटी. As I said before also, personality is a pattern where whether you are filled with self-doubt, or you are addicted to perfectionism, or you have a healthy base, you can upgrade your personality. You can upgrade and achieve what you desire. So now, अब I have asked you 4 questions. तो जिसमें why this option led to self doubt, why this option left to perfectionism, and why the option led to a healthy base. There are 3 thoughts or 3 killer thoughts of our personality which damages the personality the most. 3 चीजें या 3 थॉट्स ऐसे होते हैं हमारी पर्सनालिटी में, जो हमारी पर्सनालिटी को सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं. वो 3 थॉट, they are the 3 thoughts that damage our personality. They are the killer of our personality. The first thought is, what are the people going to say? लोग क्या कहेंगे? This is the worst killer of personality. Maximum people do not rise, do not shine because they think लोग क्या कहेंगे. मैंने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे, मैंने वीडियो बनाए तो लोग क्या कहेंगे, मैंने रील्स पोस्ट करी, लोग क्या कहेंगे, मैं अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ इस सब्जेक्ट में, लोग क्या कहेंगे. एवरीथिंग. मैं इस स्ट्रीम को, अगर मैं साइंस स्ट्रीम को लेके आर्ट स्ट्रीम लूंगा, लोग क्या कहेंगे. अगर मैं मैथ्स नहीं पढ़ पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे. मैं गाना अच्छा गाता हूँ बट अगर किसी प्लेटफॉर्म पे गाना गाया, लोग क्या कहेंगे. देयर आर नंबर ऑफ लोग क्या कहेंगे थॉट्स which resists us from becoming what we desire to become. They have resisted most of the people. They have kept the people as an introvert inside their shell. जैसे आपने कछुए की शेल देखा है, लोग अपने टैलेंट को, अपने हुनर को, अपने आप को एक शेल के अंदर बंद करके रखते हैं, और ऐसे ही लोगों को इंट्रोवर्ट टाइटल मिलता है, जो कि सिर्फ ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे, कुछ भी बड़ा करने से डरते.
The second killer of our personality is I'm not good enough. मैं काफी नहीं हूं. I am not good enough. So the second killer is कि अपने ऊपर डाउट करना, अपनी काबिलियत पे डाउट करना और ये सोचना कि आई एम नॉट गुड इनफ टू डू दिस और आई एम नॉट गुड इनफ टू डू दैट. व्हेन वी गो टू परफॉर्म एनी टास्क, हम पहले से ही अपना एक माइंडसेट बना के रखते हैं कि नो, आई कैन नॉट डू दिस बिकॉज आई एम नॉट गुड एट दिस. एंड द थर्ड किलर इज मेरा कुछ नहीं हो सकता, losing all the hopes. The third thought that kills our personality is nothing can happen to me. I have lost all the hopes. So ये तीन थॉट्स जो कि हमारी पर्सनालिटी को डैमेज करते हैं और इन तीन थॉट्स को हमें obviously these are the negative thoughts and we need to change these negative thoughts into the positive thoughts. लोग क्या कहेंगे, मैं काफी नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता. What will the people say? I am not good enough. I have lost all hope. Nothing can happen to me. These thoughts can be converted from negative to the positive one. These thoughts need to be changed from the negative to the positive one. So, how to replace your negative thoughts? We can replace our negative thoughts when we see anything as a problem. जब हम किसी भी चीज को एक प्रॉब्लम की तरह लेते हैं, तो we need to think that this is not a problem, this is the opportunity. ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है. एंड यस, आई नीड टू डील विद दिस अपॉर्चुनिटी. ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी. सेकेंडली, अगर हम कहीं पे फेल होते हैं, इफ फेलियर occurs in doing a task, obviously no one is 100% perfect. कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी स्टेप पे everyone faces failure. So when any failure occurs, take it as a feedback. उसे एक फीडबैक की तरह लीजिए और उसकी एनालिसिस करिए, अपने टास्क की एनालिसिस करिए. वेयर यू वेर रॉन्ग, कहाँ पे आपसे गलती हुई और क्या चीजें उसमें इनपुट करके सुधारी जा सकती हैं, क्या चीजें उससे एक्सक्लूड किया जा सकता है, कैसे आपको उस फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट करना है. So you can take feedback from that failure so that when you go to perform your next task or any other task, you can take those feedbacks with you and implement them on those thoughts, on those tasks. And the third is, जब भी आपको डर लगे, जब भी कोई टास्क करने में, कुछ करने में, कुछ सोचने में या कहीं पे भी कोई थॉट आए which is a thought of fear, जब आपको डर लगे हारने का, डर लगे लूज करने का, डर लगे गिर जाने का, डर लगे रिस्क लेने का, किसी भी चीज का डर लगे, टेक एक्शन और उसी डायरेक्शन में एक्शन लीजिए. जब आपको डर लगे कि क्लासरूम में अगर मैं जवाब दूंगा तो लोग हंसेंगे, टेक एक्शन एंड टॉक वन डे. आप एक दिन बाद, आप एक दिन जवाब देंगे, एक दिन बोलेंगे क्लास में, हो सकता है लोग हंसे, दिन से वो हंसी बंद हो जाएगी. आप एक दिन एक्शन लेंगे, हो सकता है यू फेस सम हार्डशिप बट फ्रॉम द अनदर डे इट विल बी वेव्ड ऑफ. व्हाई? क्योंकि आप उससे कुछ ना कुछ सीख चुके हो. So when any type of fear comes, take action. Action लीजिए. I cannot do it, say I will learn it and do it. मैं कैसे नहीं कर सकता, मैं सीखूंगा और इसको करूंगा. I cannot do it को convert करिए और बोलिए I will learn it and do it. I may fail, convert it and say I will try my best. I will try my best to do it. I will try my best to do this. I may fail. ये टास्क करते समय मैं फेल हो जाऊंगा या हो सकता हूँ. इस थॉट को चेंज करिए और बोलिए I will try my best. So एक सिंपल सी साइकोलॉजिकल इंसाइट है.
कि आप अपने ब्रेन को जो बिलीव करवाते हैं, रिपीटेडली आप उसको जो बोलते हैं, जो थॉट आप जो उसको फीड करते हैं, what thoughts you feed your brain, the brain starts to believe that. जो भी थॉट, जो भी आप अपने दिमाग को खिलाते हैं, फीड करने का मतलब है अपने दिमाग को जो भी आप खिला रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव थॉट हो, वही सच बन जाता है। आपका दिमाग आपको उसी पे विश्वास करने लगता है। इट स्टार्ट्स टू बिलीव दैट। सो योर ब्रेन बिलीव्स व्हाट यू रिपीटेडली टेल। आपका ब्रेन वही विश्वास करेगा जो आप उसको रिपीटेडली बताओगे। So why to tell negative to our brain? We should always tell positive to our brain so that our brain believes in positivity. अगर हम पॉजिटिव थॉट्स फीड करेंगे तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिविटी में बिलीव करेगा, पॉजिटिव बिहेवियर होगा, पॉजिटिव हैबिट्स होंगे, पॉजिटिव रिएक्शंस होंगे, पॉजिटिव पर्सनालिटी होगी एंड पॉजिटिव डेस्टिनी एंड लाइफ होगी। सो अब बात करते हैं। सो आर एट दी ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर लाइव सेशन थोड़ा एट द एंड, बट यस आई नीड टू गिव यू फ्यू टास्क एंड एक्टिविटी। तो जो पहला टास्क है दैट आई वांट टू गिव यू इज फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे तक आपने क्या करना है? यू हैव टू नोट डाउन ऑल योर नेगेटिव थॉट्स। यू आर गोइंग टू नोट all your negative thoughts in a copy. Make a diary or a journal or a simple copy. Write in above it 30 days personality upgrade challenge. Day one task. Day one task. First is your personality decoder. What is your personality? The second is you are going to write all your negative thoughts in that. अपने सारे निगेटिव थॉट्स आप उसमें रखेंगे, उसमें लिखेंगे। 24 घंटे के लिए आप अपने सारे निगेटिव थॉट्स को करेंगे और हर थॉट को आप एनालाइज करेंगे कि वेदर इट इज अ फैक्ट और सिर्फ आपका एजम्पशन। सपोज मेरे आई थिंक माई मदर डज नॉट लव्स मी। एक थॉट मेरे दिमाग में आया है कि माई मदर डज नॉट लव्स मी। So I'll write this thought in my journal, in my diary, that negative thought number one, my mother does not loves me, और उसके नीचे मैं लिखूंगी फैक्ट और assumption। ये मेरा फैक्ट है, ये फैक्ट है या ये assumption है। एंड ऑब्वियसली इट इज योर assumption, क्योंकि दुनिया की ऐसी कोई भी मदर नहीं है जो अपने किड्स को लाइक नहीं करती, लव नहीं करती। सो इट इज नॉट अ फैक्ट। So below that negative thought, you are going to write and ask whether it is a fact or it is an assumption. And आप बहुत ही surprised होंगे to find that 70 to 80% of your negative thoughts are assumptions. वो सिर्फ हमारे assumptions हैं, वो fact नहीं है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको जितने भी निगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, लैंड करते हैं, यू मेक अ लिस्ट ऑफ दोज निगेटिव थॉट्स। उनके सामने फैक्ट और एजम्पशन टिक करिए अगर वो फैक्ट है, अगर फैक्ट नहीं है एजम्पशन है तो एजम्पशन पे टिक करिए। Okay, so make a table. If you have written 10 negative thoughts, you will find that 6 to 7 thoughts are assumptions. ये आपकी assumption है, ये reality नहीं है, ये fact नहीं है। So this is your challenge number one for day one task. नेक्स्ट एक एक्टिविटी उसके बाद जो करनी है आपको, आपको अपने निगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करना है। लाइक आई हैव रिटन द नेगेटिव थॉट माय मदर डज नॉट लव्स मी। नाउ व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन
whether I will judge whether it is a fact or it is an assumption, and below it, I'll try to convert it into positive. No, my mother loves me very much. So our activity is write your negative thought and convert it into positive action. Suppose आपने 10 negative thoughts लिखे हैं, जिसमें से 7 negative thoughts आपके assumptions हैं, तो obviously these assumptions are from today or from till the day you do this task, you are going to convert those assumptions into a positive fact. आप अपनी निगेटिव एजम्पशंस को पॉजिटिव फैक्ट्स में कन्वर्ट करेंगे. माई मदर लव्स मी वेरी मच एंड दिस इज द फैक्ट. नो वन लव्स व्हेन आई स्पीक. अगर आपका निगेटिव थॉट ये है कि मैं बोलूंगा तो सब हंसेंगे, इसे एक पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करिए. नो वन लव्स व्हेन आई स्पीक. So convert your negative thoughts, whether they are facts or they are assumptions, into positive action statement. So I hope you are going to do all the uh, tasks, and tomorrow you are going to comment in the chat or on the video, which will be on the channel. Comment what your personality is, then you are going to comment your negative thoughts. Let us all break the shyness कि अगर ये चीज किसी को पता चली तो वो क्या कहेंगे. भाई मेरे, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी लाइफ, आप के बारे में सोचे और आपको जज करे. Everyone is busy with their life. Everyone is फेड अप इन दिस रैट रेस. सब भाग रहे हैं एक अंधी दौड़ में और सब अपने अपने में परेशान हैं. तो किसी को फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो. कुछ समय के लिए लोग बोलते हैं और बाद में भूल जाते हैं. सो यस, यू आर गोइंग टू कमेंट. आप अपने टास्क को चाहे तो कमेंट कर सकते हैं या कल चैट में आके आप बता सकते हैं. आई एम गोइंग टू रीड ईच कमेंट, each chat tomorrow, day 2, which is based on confidence. So आज की जो हमारा सेशन था, जो हमारा की टेक अवे है या आज हमने क्या सीखा, वो ये सीखा कि हमारे थॉट्स हमारे एक्शंस को बनाते हैं. our thoughts shape our actions create habits, these habits build our personality, and the personality shapes our destiny and life. So by a single positive thought, by converting our negative thoughts into positive thoughts, we can obviously change our personality from a negative to positive. We can upgrade our personality, and yes, we can change our destiny and our life. From a no voice, we can become an unshakable personality, unmatchable, who people cannot resist without seeing you, without liking you. So now, this is a roadmap for the 30 days challenge, in which in the week 1 we are going to build your mental foundation. जैसे आज हमने किया कि आज हमने बात करी thoughts पे. Tomorrow we are going to talk on confidence. Then the next week we are going to discuss about how to speak and connect with people. Week 3 is dedicated to emotions and relationships, and week 4 is identity and discipline related. So, by dealing with all the 4 traits, we are going to upgrade our personality. A quick look at the coming 7 days. The first, today was thought shapes your personality. Day 2, confidence starts in your mind, then stop
body language basics, how to speak with confidence, self-respect rules, and weekly transformation result. At the end of each week, we are going to have Q&A in which your participation will matter. So today's challenge is catch yourself once today in a moment of self-doubt. नेक्स्ट टास्क इट अपने आप को एक ऐसे मोमेंट में कैच करिए जहां आपको अपने पे ही डाउट है. सपोज आपको कुछ काम दिया गया या कुछ आपको परफॉर्म करना है या कुछ और आपको अपने पे ही डाउट हो गया, अरे मैं तो ये कर ही नहीं सकता, आपने वो अपॉर्चुनिटी गवा दी. तो कैच योर सेल्फ वंस टूडे इन अ मोमेंट ऑफ सेल्फ डाउट. Do not try to fix it. Do not judge it. Just notice the thought and write it down. So, the third task is you are going to catch yourself in a moment of self doubt and you are going to write it. You are only going to notice it. जब आप अवेयर होते हैं किसी चीज से तो आप चेंज की शुरुआत होती है. अवेयरनेस ऑलवेज कम्स बिफोर चेंज. पहले जानिए तो कि आप में सेल्फ डाउट किस चीज को लेके है. जानना ही प्रॉब्लम का डायग्नोसिस. व्हेन द डायग्नोसिस इज करेक्ट द क्योर इज करेक्ट. तो पहले डायग्नोस तो करिए कि सेल्फ डाउट आप में है और किस चीज को लेके है. तो ट्राई टू कैच योर सेल्फ 24 आवर्स. अपने ब्रेन के थॉट प्रोसेस को मॉनिटर करिए और पता करिए कि सेल्फ डाउट अगर है तो किस चीज में है और उससे अवेयर होइए. So next day, tomorrow, we are going to deal with confidence starts in your mind. Tomorrow's topic. So same time, same platform, same channel. Come and join. Press the bell icon and to get notifications, subscribe to my channel and like it. 3 things to do that you will do right now. Comment one word, how you feel, subscribe and turn the notification and come back tomorrow. So bye everyone. Stay upgraded. अपने सोच को अपग्रेड करें और अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड करें. So thank you for listening. Thank you very much for listening and coming with me on the journey of 30 days personality upgrade challenge. So thank you very, very much.